अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। नूतन मोदी प्रशासनस्य अद्य प्रभृति कार्यगतिः समारभेत। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, HD कुमारस्वामी समेताः अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणः अद्य सम्भालयेयुः पदभारम्। ओडिशा राज्ये अद्य समाचरेत् केन्द्रीय पर्यवेक्षकयोः राजनाथ सिंह धर्मेन्द्र प्रधान इत्यनयोः उपस्थित्यां भाजपेति दलविधायकदलोपवेशनं। नूतन मुख्यमन्त्रिणः नामविषये भवेत् निर्णयः। विजयवाड़ास्थले तेलुगुदेशमिति विधायकदलोपवेशनम् अद्य। दलस्य नवनिर्वाचित विधायकः चन्द्रबाबू नायडू इत्येषः कुर्यात् नेतृचयनम्। शीर्ष न्यायालयः कथितम् अनुचितरीत्या पत्र प्रकाशन प्रकरणे ऐषमः नीट यूजी इति परीक्षा निरस्तीकरणपरां याचिकाम् आलक्ष्य कुर्यात् वादश्रवणम्। याचिकायाम् अनेके अभ्यर्थिनः ग्रेस मार्क्स इति अङ्कप्रदानपरं निर्णयं समाहूतवन्तः सन्ति। निदाघलहरी प्रकोप पीडितमस्ति सकलमपि पूर्वोत्तरभारतं। ऋतुविज्ञानविभागेन उक्तम् आगामि कतिपय दिनानि यावत् उष्णप्रकोपस्थितिः समाना एव स्यात्। तत्रैव महाराष्ट्र गोवा राज्ययोः प्रचण्डवृष्टिपातस्य सम्भावना। अपि च संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि गाज़ास्थले युद्धविरामं बन्धकानां मुक्तिविषयकः च प्रस्तावः पारितं गतः। हमासतः प्रस्तावं स्वीकर्तुं कृतङ्गतम् आह्वानम्। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् कोटिशः देशवासिनां गरिमापूर्णं जीवनम् इतोपि उत्कर्षतां प्राप्नुयात्। एतदर्थम् एकः बृहत्तमः पदक्रमः। अस्मदीय प्रशासनेन अद्य प्रधानमन्त्री आवास योजनायाः विस्ताराय ग्रामेषु नगरेषु च 3 कोटि आवासानां निर्माणं करिष्यति इति निर्णयः कृतः अस्ति। एषः निर्णयः जनजीवनस्तरं सरलं कर्तुम् अस्माकं प्रतिबद्धतामपि द्योतयति। एतेन निर्णयेन न केवलं जनानां गृहावश्यकता एव पूर्णा भविष्यति, प्रत्युत ते गुणवत्तापूर्णं जीवनमपि प्राप्स्यन्ति। PMAY इत्येतस्याः योजनायाः विस्तारः समेषां विकासेन सहैव समाजकल्याणं प्रति अस्माकं दृढसङ्कल्पमपि समक्षम् आनयति। ओडिशा राज्ये निर्वाचनक्रमे कांग्रेस दलस्य अनुत्तम प्रदर्शनस्य दायित्वं स्वीकुर्वन् भक्त चरणदासः स्वपदात् त्यागपत्रं लिखितवान्। निर्वाचनात् पूर्वं भक्त चरणदासाय कांग्रेस अभियान समितेः अध्यक्षपदस्य दायित्वं प्रदत्तम् आसीत्। परं लोकसभायाः विधानसभायाः च निर्वाचनपरिणामाः भद्रतराः न आगताः। तस्मात् स्वकं नैतिकं दायित्वं निभालयन् असौ अध्यक्षपदात् त्यागपत्रं लिखितवान्। 19-2000तमे वर्षे विधानसभा निर्वाचने कांग्रेस दलं 9 आसनेषु विजितम् आसीत्। तथापि एतस्मिन् पर्याये 14 आसनानि दलेन विजितानि। लोकसभा निर्वाचने च कांग्रेस दलं केवलम् एकमेव आसनं विजितवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शपथग्रहण समारोहे सहभागं कर्तुं भारतम् आगतः मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू इत्येषः राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारमेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शपथग्रहण समारोहे सहभागं कर्तुं भारतम् आगतः मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री प्रविन्द कुमार जगन्नाथः अपि नवदिल्ल्याः राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारमेलनं कृतवान्।
तावत् नेपालदेशस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल प्रचण्डः नवदिल्लीस्थिते राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अमिलत्। अवधातव्यं यत् पुष्पकमलदहल प्रचण्डः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः शपथग्रहणसमारोहे सहभागं कर्तुं भारतम् आगतः अस्ति। सिसेल्स् देशस्य उपराष्ट्रपतिः अहमद अफीक इत्यसौ नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अमिलत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः मोहन राव भागवतः नागपुरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। स्वीय सम्बोधने असौ उक्तवान् यत् विगतेभ्यः 10 वर्षेभ्यः प्रशासनेन अनेकानि उत्तमकार्याणि कृतानि सन्ति। सहैव असौ उक्तवान् यत् अधुना निर्वाचनावेशे परस्परं कृतान् आरोपान् विहाय अधुना अगम्यमानाः समस्याः अस्माभिः अवधातव्याः समाधेयाः च। 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः आगतप्रायः। देशे एतदाचरणाय च विभिन्नकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। प्रतिवर्षम् एतस्य दिवसविशेषस्य कश्चन प्रमुखः विषयः भवति। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य विषयः अस्ति स्वयं समाजाय योगः, अर्थात् स्वस्मै समाजाय च योगः। डीडी न्यूज़ वाहिन्या सह विशेषवार्तां कुर्वन् आयुष सचिवः वैद्यः राजेश कोटेचा इत्यसौ उक्तवान् यत् ऐषमः अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसम् आलक्ष्य देशे अनेके कार्यक्रमाः प्रवर्तन्ते। प्रतिवर्षं जून मासिके 21 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः आचर्यते इति तु विदितमेव। इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुदेव कुटुंबकम थी। इस वर्ष जो ये है तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस बार इस पर हम काम कर रहे हैं। मलावी देशस्य उपराष्ट्रपतिं सोलोस चिल्मा इत्येतम् अथ 9 अन्यजनान् च स्वीकृत्य गच्छत् एकं विमानं लुप्तम् अभवत्। सोमवासरे राजधान्याः लिलोङ्ग्वे इत्यतः प्रस्थितस्य मलावी रक्षाबलस्य एतस्य विमानस्य सम्पर्कः रडार इति स्थानसूचकयन्त्रेण सह विच्छिन्नः जातः। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदा गाजा स्थले प्रवर्तमाने युद्धे विरामः, बन्धकानां मुक्तिपरः च प्रस्तावः पारितः अस्ति। हमास समूहात् तावत् प्रस्तावं स्वीकर्तुम् आह्वानमपि कृतमस्ति। देशे ऋतोः विविधः प्रभावः दृश्यमानः अस्ति। कुत्रचित् प्रावृषा अतिवृष्टिः, कुत्रचित् च एतावतापि सौष्णोष्ण्यम् अस्ति। प्रावृषः विषये ऋतुविभागानुसारं कोङ्कण क्षेत्रस्य गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ इत्येतेषु स्थानेषु सततम् अत्यधिकवृष्टेः सम्भावना अस्ति। एतेषु क्षेत्रेषु दक्षिण-पश्चिम प्रावृट् अपेक्षया दीर्घकालं तिष्ठेत्। प्रावृषः अग्रगमनस्य च प्रभावः गुजरात राज्यस्य दक्षिणवर्ति क्षेत्रेषु अपि दृश्यमानः अस्ति।
तत्रैव उत्तरपश्चिमक्षेत्रे अपि तथा एव वृष्टिः संभावना अस्ति। भारतीय टेनिस क्रीडकः सुमित नागल इत्येषः सद्यः प्रकाशितं गते एटीपी रैंकिंग इत्याख्ये मानाङ्के सर्वश्रेष्ठम् अर्थात् 77तमं स्थानं प्राप्तवान्। अवधेयं यत् सुमित नागल इत्येषः स्विट्जरलैंड देशस्य अलेक्जेंडर इत्यमुं पराजित्य एटीपी प्रतियोगितां च विजित्य एतां सफलतां प्राप्तवान्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।